Assalamu alaikum students. Welcome to lecture 3 of the course Business Analytics. In this lecture, we will continue to study the topics from the chapter Descriptive Statistics. Earlier, we have discussed in creating distributions from data, the frequency distributions for categorical data, relative frequency and percent frequency distributions, frequency distributions for quantitative data, and histograms. Let us now study what are cumulative distributions. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशंस का समराइज्ड डेटा है। यहाँ इन cumulative distributions हम डेटा देखते हैं जो कि लेस और इक्वल होता है टू द अपर क्लास लिमिट ऑफ ईच क्लास। इसमें हम नंबर ऑफ क्लासेस, क्लास विड्थ्स और क्लास लिमिट्स को यूज करते हैं जिन्हें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया गया था। सो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस एक वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो कि आपको प्रोवाइड करता है विद अनदर टेबुलर समरी ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, तो जो हमने पिछले लेक्चर में ऑर्डर्ड टाइम डेटा की एग्जांपल को यूज किया था उसी को आगे लेकर चलते हैं। This is table 2.8. If you check the first two columns, cumulative frequency distribution of the audit time data is provided here. If you remember table 2.7, we had classes 10 to 14, 15 to 19, and so on. Now we will have classes less than or equal to 14, less than or equal to 19, less than or equal to 24, less than or equal to 29, less than or equal to 34. Now let's see how to determine the cumulative frequency. Consider the first column and third class less than or equal to 24. इस क्लास की cumulative frequency के लिए आप इस क्लास से less or equal to 24 डेटा वैल्यूज वाली क्लास की frequency को सम करेंगे। तो अगर हम टेबल 2.7 में देखें हमारे पास the sum of frequencies for classes 10 to 14, 15 to 19 and 20 to 24 indicates that 4 plus 8 plus 5 is equals to 17. ये जो डेटा वैल्यूज हैं ये लेस देन और इक्वल टू 24 है तो हमने इनकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दिया। Hence, the cumulative frequency for this class is 17. मजीद हम इसे कह सकते हैं कि cumulative frequency distribution शो कर रही है कि 4 audits were completed in 14 days or less and that 19 audits were completed in 29 days or less. Cumulative relative frequency distribution क्या है? Cumulative relative frequency distribution basically shows the proportion of data items. Cumulative percent frequency distribution shows the percentage of data items with values less than or equal to the upper limit of each class. Cumulative relative frequency आप sum करके find out कर लें of relative frequencies, relative frequency distribution में या फिर आप divide कर दें cumulative frequencies को by the total number of items. तो हमने फिर डिवाइड करके फाइंड आउट की वैल्यूज। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं यहाँ पे? तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन ऑर्डर टाइम्स डेटा इज 20। अगर इस डेटा को आप भूल गए तो ये डेटा सेट की इमेज देख लें, याद कर लें। सो 4 डिवाइड बाय 20 इज 0.2, 12 डिवाइड बाय 20 इज 0.6 एंड सो ऑन। परसेंट फ्रीक्वेंसी का आपको जैसे पहले हमने किया था वैसे पता है कि हम फाइंड करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय 100। सो यहाँ भी हम यही करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई द cumulative relative frequency by 100 to get cumulative percent frequency.
अब थोड़ा डेटा को एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो cumulative relative and percent frequency distributions show that 0.85 of the audits or 85% were completed in 24 days or less. 0.95 of the audits or 95% were completed in 29 days or less, and so on. Thank you.